Welcome class 11. Today we will see the secondary functions of the commercial bank. Before that we have seen the primary functions of the commercial bank. In there we have seen the different kinds of the loan, advances, sorry, and in there we have seen the different kind of advances like overdraft, cash credit, bills of exchange, etc. Okay, but in today's video we will see the secondary functions of the commercial bank. Means what are the secondary functions performed by the commercial bank. So the secondary function of the bank can be divided into the two parts. हम two parts में इसको divide कर सकते हैं. The first one is the agency function and second one is the utility function. Okay, now let's start with the agency function. Bank perform various functions on behalf of their customers or account holders, such as, means here the bank provide a different kind of service to their customers or to the account holder. Okay, so there are the some kinds of the function which is performed by the bank. Let's see one by one. The first function is performed by the bank is to the collection of checks and bills. Yes, बैंक क्या करती है, बैंक checks और bills को collect करती है और फंड रिसीव करती है, या फिर फंड हम कस्टमर क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं. ना बी, कलेक्शन ऑफ द डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड सैलरी. यस, बैंक आल्सो कलेक्ट द डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड सैलरी ऑफ द customer. Now payment of rent, insurance premium, electricity bills, etc. paid by the bank. Purchase and sales of the security. Yes, bank play role as a depository participant. Yes, बैंक एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी रोल प्ले करती है. इट आल्सो परचेज द सेल्स एंड इस तरह से परचेज एंड सेल्स द डिफरेंट काइंड ऑफ दिस सिक्योरिटीज़. अलग अलग जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको परचेज भी करती है और सेल भी करती है. सो हियर द बैंक प्ले एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. This is the role of the bank. Okay, it is also called in short the DP, that is the depository participant. Now point number fifth is the point number fifth is the remittance of money. Yes, bank also provide the service to transfer the money. Yes, we can transfer the fund through the bank. हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. So this kinds of service also provided by the bank. Now point number 6, the fulfill standing instruction of the depositor. Yes, bank also fulfill the different kinds of the instructions of the depositors. Now next point is the G, act as trustees, executor of will and attorney. Yes, banks also play a role as a trustee. बैंक trustee का भी रोल प्ले करती है. मीन्स it play as an underwriters. Okay, and this is also executor of wills and attorney. जो भी पावर ऑफ अटर्नी होती है, जो विल होती है, उसकी एक्यूटर भी होती है. ओके, सो इट एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड एक्ट एज अ बैंकर टू द इशू, लीड मैनेजर एक्सेट्रा फॉर द कंपनी. यस, बैंक आल्सो प्रोवाइड a facility as which is act as a banker. एक बैंकर की तरह भी एक्ट करती है टू इशू, लीड मैनेजर एक्सेट्रा फॉर द कंपनीज के लिए एक तरह का लीड मैनेजर का रोल प्ले करती है. सो दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फंक्शन विच इज प्रोवाइड बाय द बैंक. एंड दैट इट ऑल, इसको हम क्या बोलेंगे, इट ऑल वी कलेक्टिवली call it the agency function. So this all function which is performed by the bank, it is known as the agency function. Now second function which is performed by the bank is the utility function. You can see on the screen. So there is the commercial bank also provide the following general utility service. Yes, बैंक बहुत सारी ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है जो यूटिलाइज की जाती है बाय द कस्टमर्स और द अकाउंट होल्डर. So first one is the safe deposit vaults. Yes, bank also provide the locker facility to its customer. अपने customers को bank locker facility भी provide करती है. Okay, now letter of credit. Yes, bank also give the letter of credit. Means anyone can withdraw the amount on the basis of credit. Now dealing in foreign exchange. Yes, anyone can exchange their foreign currency into the इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी में या फिर जिस कंट्री की वो बैंक है, ओके, उसमें उस कंट्री की रुपीज़ में या फिर जो भी करेंसी उसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं. सो हियर द बैंक आल्सो डील्स इन अ फॉरेन एक्सचेंज. नाउ फोर्थ इज द ATM, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स. यस, बैंक आल्सो प्रोवाइड द ATM कार्ड्स. मीन्स एनी पर्सन कैन, any customer or account holder can anytime withdraw the money from the
ATM service room. So ATM also provided by the bank, which is the automated teller machine. Now bank also provide the credit card, means anyone can enjoy the service of the credits, and debit card also provided by the bank. Okay. Now financial position status report. Yes, bank also give the financial status reports of the customers and account holder. लाइक पासबुक भी एंट्री करवा सकते हैं, पासबुक में पूरा स्टेटस आ जाता है. ओके. नाउ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी. यस, ये हमने देख लिया है कि बैंक आल्सो प्ले अ रोल ऑफ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी. मीन्स एज अ बैंक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक क्या करती है, काम करती है. और इसके अलावा बैंक जो डिफरेंट काइंड की सिक्योरिटीज़ होती है लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, उसको बैंक क्या करती है, परचेज भी करती है और उसको सेल भी करती है. जो ट्रैवलर्स चेक, बैंक also provide the travelers check. Last point is the RTGS, that is the real time gross settlement. NEFT, yes, National Electronic Fund Transfer. We can electronically transfer the fund from one account to another account. We can pay the bills, we can pay the light bills, we can pay the taxes, etc. Means we can do any work with the help of the bank. So here the bank also provide a service in the form of the RTGS, NEFT, NACH, National Automated Clearing House, ECS, Electronic Clearing Service. This all type of the online service provided by the bank to its customer and the account holder. So this is the secondary functions of the commercial bank. The first one is the agency function, and second one is the utility function. In the next video we will come with the next point. Okay. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.